हेलो स्टूडेंट। तो पिला माने हमें प्रीवियस क्लास से कंस्ट्रेंट विषय डिस्कशन करथिलु। सो व्हाट इज कंस्ट्रेंट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट एंड व्हाई यू शुड यूज द कंस्ट्रेंट इन database. So today we are discuss about some library functions which are helps us to solve a particular type of problems or as user requirement. The library functions are helps to sort out the problems such as सो पिला माने हम से डिस्कशन करबा से फंक्शन करे। सो फर्स्ट थिंग व्हाट इज functions in MySQL. So functions in MySQL. So प्रथम जिनस आम देखा जे फंक्शन कौन एवं MySQL ये फंक्शन केते प्रकार एवं फंक्शन केमिति लेखा जाय था एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. So first thing, what is the meaning of functions? So function is a self-contained program which is carry out a particular user-defined task. So we can say that it is a self-contained program that will carry out a particular well-defined task. So function is a self-contained program which is carry out a particular well-defined task. So in MySQL it is also called method. It is also called method, and each method may or may not carry out the argument as well as return type.
सो MySQL रे प्रत्येकटी फंक्शन आइदर से किसी आर्गुमेंट नहीं पारिबो किंबा न नहीं पारिबो सेमिति किसी वैल्यू से रिटर्न करि पारे किंबा रिटर्न बदला देख करिबा any of the argument but it is always returns a value तो फंक्शन आर्गुमेंट नहीं पारो बा न नहीं पारे किंतु सब बेले से तार गोटे वैल्यू को रिटर्न करिवो ए रिटर्न टी होच तार रिजल्ट सो रिटर्न ए वैल्यू मींस इट इज द रिजल्ट argument means value argument means तो argument means जे which value can be sought out it is the value तो argument नहीं पारे सपोज मुझे एग्जांपल लिखली जे सपोज लेंथ फंक्शन argument नहीं पारे वो क्यों नहीं पारे then each method contain a pair of parentheses that is bracket and also bracket this is the symbol of parenthesis तर प्रत्येक फंक्शन ले गुटे रहिबो parenthesis so syntax of function में लिखिबा तो syntax of function ले बेसिकली गुटे रुए फंक्शन name this is the bracket and here it is a data type and here data type list तो देखो पिला माने मो लेखिली गुटे फंक्शन ले एटा ला फंक्शन रो नेम रो प्रत्येक ब्रैकेट रहिला ब्रैकेट भितर मो लेखिली डाटा टाइप लिस्ट एठी लेखिली डाटा टाइप यार मीनिंग को जे एठी काहे कि मो डाटा टाइप लिस्ट देली एठी काहे कि मो डाटा टाइप रखिली तो एठी ये आको में कोई थाउ दिस इज अ रिटर्न एरिया रिटर्न टाइप और रिटर्न टाइप वैल्यू ये हो तुम्हारा आर्गुमेंट लिस्ट ये आर्गुमेंट लिस्ट तो फंक्शन केतोटी वैल्यू को नबो एवं ता रिजल्ट कौन से रिटर्न करिवो तो रिटर्न टाइप इज ऑलवेज रिटर्न ए सिंगल वैल्यू बट द आर्गुमेंट may or may not more than one value either single ei pare multiple ei pare ba empty madhya ei pare so here return type is the result argument को हमें कोई परिबा argument रो अर्थ हला it is the value which is carried out by the functions क्लियर तले फंक्शन कोन छ बुझेला तले एबे हम लिखिबा एबे हम लिखिबा जे ई जो फंक्शन आसिला तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन दैट इज types of
function. Types of function. The function kete prakar. There are types of function. So first thing, there are two types of function. There are two types of function such as যদি আমরা দেখিবা তাহলে function having functions in MySQL. So there are two types of functions. One is scalar function. And number two is aggregate function. So one is scalar function and another is aggregate function. So here scalar function is also called scalar function को हमें कही परिबा it is single raw function. आको हमें कौन कही परिबा single raw function. आको हमें कही परिबा it is multi raw function. तले MySQL रे पिला माने केते प्रकार फंक्शन रहिला ना दी प्रकार रहिला गुटे सिंगल आ गुटे मल्टी. तले किछि फंक्शन अछंती जो फंक्शन माने इंडिविजुअल रॉ रो वैल्यू को नै किछि कैलकुलेट करिवे आ किछि अछंती मल्टी रॉ को नै कार्य करिवे. फॉर एग्जांपल so here suppose here is a table. तो सिंगल रॉ जता पुट डाउन हो से इंडिविजुअल सेल वैल्यू को एक कैलकुलेट करिवे. दिस इज द इंडिविजुअल सेल. जता मल्टी रॉ पड़िबो से से एंटायर कॉलम को नै से कार्य करिवे. त गुडला स्केलर फंक्शन आ गुडला सो स्केलर फंक्शन जे हम देखिबा so these are function actually one is the scalar function and another is the aggregate function. तले scalar function ऊपर हम डिस्कशन करिला प्रथमे what are the scalar function. This is the scalar function. It is also called co-function पगला. Now this is single raw function. This is the single raw function. तले प्रत्येक स्केलर फंक्शन को हमें सिंगल रॉ फंक्शन बोली कहबा because it is always by it is manipulate single raw value at a time गुटे टाइम रे से सिंगल वैल्यू को से मैनिपुलेट करि परिबो एवं एग्रीगेट फंक्शन करि परिबो ना मल्टीपल फंक्शन गुडी को से कार्य लगी परिबो. सो हियर दैट इज द स्केलर फंक्शन. एवं देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्केलर फंक्शंस आर देयर. सेमिति एग्रीगेट फंक्शन जदि हम देखिबा देयर आर it is also called multi raw or multiple raw function बोली कहबा. एवं ई फंक्शन भी मल्टीपल
रो रो वैल्यू को लेके से कार्य करिवो एट ए टाइम में। सो एबे हम लिखबा स्केलर फंक्शन जो आसला कोन कोन स्केलर फंक्शन गुडी को रहिला। तो अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी देयर आर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनिंग देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्केलर फंक्शंस। एवं तले बेसिकली ये जो स्केलर फंक्शन के आसला तो एमाने फंक्शनिंग अनुसार according functions there are three types केतरा आसला there are three types how many types of scalar function ना there are three types of scalar function गोटेला string function numeric function numeric और तक में लिखा हो mathematical function आउट आसला तुम्हारा date and time function तले सेमान को कैटेगरी अनुसार से जो फंक्शन टे आसिला से फंक्शन को सेमाने डिवाइड करले केते भाग रे दी भाग रे गोटेला स्केलर आउट आसिला इंटीग्रेट फंक्शन स्केलर फंक्शन कोन करिवो ना एट ए टाइम रे से सिंगल रो वैल्यू को नै से कार्य करिवो आउ एग्रीगेट फंक्शन से कोन करिवो ना ग्रुप ऑफ वैल्यू को नै से कार्य करिवो जहा को हमें कहिथाउ एग्रीगेट फंक्शन कहि परिबा और मल्टी कहि परिबा और आपको हमें कहि परिबा ग्रुप फंक्शन और आपको हमें कोन कहि परिबा ग्रुप फंक्शन बोली हमें कहि परिबा। सो हियर एग्रीगेट फंक्शंस आर देयर एग्रीगेट फंक्शन जे लिखिबा एग्रीगेट फंक्शन जे हम डिस्कशन करिबा ना इट इज आल्सो कॉल्ड सिंगल रो फंक्शन जे हम लिख परिबा मल्टी रो फंक्शन और ग्रुप फंक्शन बोली हम कहि परिबा। सो हियर इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रुप और मल्टी रो function it is carry out or it is manipulate group of value or multiple value at a time so basically से मल्टी रो ताले गुटाला ग्रुप आउट आसला स्केलर आउट एग्रीगेट ताले स्केलर फंक्शन विषय में डिस्कशन करले एबे आसले तो ये जो ग्रुप फंक्शन विषय में डिस्कशन करले तो ये मैथमेटिकल फंक्शन विषय में गले जे देखिबा दैट इज द मैथ फंक्शन तो ये मतलब आसला ग्रुप फंक्शन में देखिबा ये हला देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शन now there are 5 types of aggregate functions are there and how many type of scalar function now there are 3 types of scalar function तले ये जो पांचोटी आसला कोन कोन आसला ना गुटे आसला 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर एंड 5 नंबर प्रथम आसला सम फंक्शन फर्स्ट फंक्शन के आसला सम देन एवरेज sum avg then max function mean function max and mean बुझिया नहीं max and mean function
ଗୋଟେ ଆସିଲା କିଏ that is the count function. তাহলে total ছুয়া how many types of aggregate functions are there? Now there are 5 types of aggregate functions are there, such as sum, avg, max, mean and count. Max, mean and count. Clear? तो एबे हमें जिबा तले में जो फंक्शन गुडी के विषय में लिखिले तले एबे हमें डिस्कशन करिबा स्केलर फंक्शन विषय देन हमें जिबा एग्रीगेट फंक्शन विषय तो ये जो स्केलर फंक्शन विषय में लिखिले स्केलर फंक्शन रो प्रथम फंक्शन रो नाम कान जे लेछि ना दैट इज स्ट्रिंग फंक्शन तो स्ट्रिंग माने समाज बुझी पाउथिबो बेसिकली हम कोइ स्ट्रिंग माने कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर that is the either गोटे टेबल अछि टेबल रे तार गोटे नेम कॉलम अछि एड्रेस कॉलम अछि एई सब जिंस गुडी करे हमें सेट करि थाउ स्ट्रिंग टाइप रो वैल्यू पाई ओटा रो वैल्यू पाई हमें सेट करथाउ ना स्ट्रिंग टाइप रो वैल्यू पाई हमें सेट करथाउ ताले प्रथम में देखिबा स्केलर फंक्शन लो प्रथम फंक्शन टिर नाम आछला that is string function string library function string library function library माने predefined function which is previously present users can only use that function and manipulate the data तले ए जो string function टी आसिला तले string function हमें कहा कोइबा ना those functions but this type of functions are manipulate the string value. So string functions mean those functions are manipulate the string value. Manipulate the string value. ताले जो फंक्शन गुडी को स्ट्रिंग वैल्यू को मैनिपुलेट करि परिबे सेही फंक्शन गुडी को हमें कहबा स्ट्रिंग फंक्शन सेमिति नंबर 2 रे हमें देखिबा सेकंड की थिला हमर को फंक्शन टी ना न्यूमेरिक और मैथमेटिकल फंक्शन दैट इज द न्यूमेरिक और मैथ फंक्शन न्यूमेरिक और मैथ फंक्शन नंबर 3 रे थिला दैट इज द डेट एंड टाइम फंक्शन डेट एंड टाइम फंक्शन तल टोटल तीनटा फंक्शन थिला गुटे स्ट्रिंग न्यूमेरिक और डेट एंड टाइम तो ई तीनोटी फंक्शन को नै कि हमें कहथले दीज आर दी scalar function these are the scalar function tale total there are 3 types of scalar functions are there string numeric and date and time function तो पहला माने ए जो date and numerical सेमती कोन करिवो ना इट इज manipulate numerical value आउ date and time कोन करिवो it is manipulate date type value डाटा टाइप विषय के मने पकाउ छुआ जे गुटे थिला न्यूमेरिकल डाटा टाइप स्ट्रिंग डाटा टाइप और डेट डाटा टाइप तीनटा थिला कि नहीं आमे किछि जगह रे केवल नंबर बा न्यूमेरिकल वैल्यू को रखिबा किछि जगह रे कैरेक्टर वैल्यू बा स्ट्रिंग वैल्यू को रखिबा आ किछि डेट ऑफ बर्थ बा डेट ऑफ जिंस को रखिबा तो ए जो तीन प्रकार वर्जन आसिला त ये बेसिकली जो डाटा टाइप बा जो कलम रो डाटा टाइप टी आइदर कैरेक्टर थिबो भार्कर थिबो और भार्कर को सेट करथिबो
এই जो डाटा टाइप गुड़िक जो सेट हेतिबो सेही डाटा टाइप रे जो वैल्यू गुड़िक तमे देइथिबो सेही वैल्यू गुड़िक माने एही डाटा टाइप रो वैल्यू को मैनिपुलेट करिवो स्ट्रिंग फंक्शन न्यूमेरिकल रे केवल इंटीजर डाटा टाइप जो कॉलम टेबल जो कॉलम रे तमे इंटीजर सेट करथिबो सेही डाटा टाइप को मैनिपुलेट करिवो ई फंक्शन टी आ जो कॉलम रे तमे सेट करथिबो डेट कोटा डेट ताकू मैनिपुलेट करिवो तमरो ए फंक्शन टी तले वर्तमान में देखिबा कैटेगरी अनुसार कोन कोन फंक्शन ताको भितर रहुची तले प्रथमे में देखिबा स्ट्रिंग फंक्शन रे कोन कोन रहिची फर्स्ट देखिबा एक नंबर रे प्रथमे अछि लेंथ गुटे फंक्शन अछि लेंथ फंक्शन रिवर्स फंक्शन ट्रिम फंक्शन लेफ्ट फंक्शन राइट फंक्शन लेफ्ट ऑब्वियसला राइट फंक्शन मिड फंक्शन एटा सब फंक्शन सिंबल दिस इज द राइट फंक्शन मिड फंक्शन देन राइट लेफ्ट मिड पर हम देखिबा lks फंक्शन और uks lks and uks function lks and uks function then number 8 रे हमें देखिबा care function क्या असला care function तापर देखिबा हमें 9 रे जदि हम देखिबा तापर उच्च तमरो concave function 10 ले जदि हम देखिबा instr function 11 ले जदि देखिबा ascii function so these are the functions of string library function so ei function गुडी को हमें कोन कहिबा स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन गुली हमें डिस्कशन करि पाइबा बा कहि पाइबा सेमिति जदि हमें देखिबा अरिथमेटिकल फंक्शन ले कोन कोन रहिछि ना अरिथमेटिकल फंक्शन ले तले अरिथमेटिकल फंक्शन ले हमें देखिबा के फंक्शन अछि mod प्रथम फंक्शन ले कोन अछि mod then power function और हम तक लिख पाइबा power function then round function then square root sqrt square root function आगे अछि ट्रंकेट फंक्शन तले ए सब फंक्शन गुडी को लेके हमें मैथमेटिकली एक्सप्रेशन को हमें सॉर्ट आउट कर पाइबा इन MySQL ले सेमिति डेट एंड टाइम फंक्शन गुडी जे जिबा डेट एंड टाइम रे नाउ डेट तापरे month year then day of month number 6 day of year then
डे ऑफ वीक 7 रे लिख परिबा डे ऑफ वीक लिख परिबा देन सीज डेट 8 रे सीज डेट 9 रे कोर सीज डेट पर आसो के ना कोर डेट so these are the functions list of functions are there तो वर्तमान ये जो फंक्शन गुडी को म लेखिली एति प्रकार फंक्शन रहिछि एवं प्रत्येक फंक्शन ला गोटे निर्दिष्ट कार्य रहिता तो these are the functions तले एबे हम डिस्कशन करबा प्रथमे को फंक्शन विषय ना स्ट्रिंग फंक्शन लिखिबा ये जो लिखा जाइछि एमानकर फंक्शन विषय में डिस्कशन करिबा तले बर्तन का तो हम रीडिंग कर दोची प्रथम आसला स्ट्रिंग फंक्शन ले कोन को लिखा जाइछि दिस इज द लेंथ फंक्शन रिवर्स फंक्शन trim trim and left function right function mid function lcase and ucase function char function concave function inst function and also ASCII function clear तले प्रथम डिविजन देखिबा प्रथम फंक्शन के आसला लेंथ फंक्शन सो लेंथ फंक्शन तो एथि फंक्शन केमिति ना सपोज मोर एग्जांपल दोची बर्तन मो पर गोटे टेबल अछि दिस इज a table and here all are the columns are there and table name is student here the column or field is roll number name address and date of birth so here there are various types of records are there तले बर्तन से कहूची बर्तन को देखिया पे जाउची ए जो नेम गुडी को अछि तमे नेम कॉलम रे तमे जो स्ट्रिंग एठी अछि बर्तन ये अछि न्यूमेरिकल वैल्यू ये अछि स्ट्रिंग वैल्यू तले स्ट्रिंग वैल्यू जो फील्ड रे सेट हेतिबो सेमानकर प्रत्येक इंडिविजुअल वैल्यू रो किछि हमें मैनिपुलेशन करि परिबा तो लेंथ फंक्शन का होची इट इज यूज्ड फॉर display or count the number of तो एठी हमें यदि स्ट्रिंग फंक्शन बा लेंथ फंक्शन बिषय डिस्कशन करिबा हम कहि परिबा जे इट इज ए स्ट्रिंग फंक्शन इट इज यूज्ड फॉर फाइंड आउट और डिस्प्ले द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग डिस्प्ले द length of a string value display the length of a string value जेकोनसी स्ट्रिंग वैल्यू रो लेंथ कैलकुलेट करबा पई हमकु लेंथ फंक्शन से प्रोवाइड कला इट टेक्स एमके लिखिबो इट टेक्स ओनली वन आर्गुमेंट एंड रिटर्न ए वैल्यू तो जेतो डेफिनेशन है इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग वैल्यू सेकंड लिखिबो इट इज कैरी आउट ए आर्गुमेंट कैरी आउट ओनली वन आर्गुमेंट तो एठी मन रखिबो ये स्केलर फंक्शन ले इंडिविजुअल वैल्यू गुडी को जे नबो एग्रीगेट फंक्शन ले ग्रुप ऑफ वैल्यू से उठेइबो तो इट इज कैरी आउट ओनली वन आर्गुमेंट एज numerical it is carry out only one argument as a string value and return a
एज ए इंटीजर वैल्यू और तुम कहि परिबो न्यूमेरिक वैल्यू बुझ पाला ना नहीं तमार स्ट्रिंग वैल्यू टा से आर्गुमेंट रे नबो रिटर्न करिवो गुटे तमरो इंटीजर टाइप रो वैल्यू तबे एठी हम एग्जांपल बा सिंटेक्स लिख परिबा फार्मूला टी से कहूची केमते लिखा जिवो ना सिंटेक्स के तमे लिखिबो दैट इज द इंटीजर लेंथ आर्गुमेंट रे रहिबो स्ट्रिंग argument रहिबो string that is the integer length string value example तमे पकेई परिबो example तमे देई परिबो सपोज हम कोहा जाय छी display each student's name contain how many letters गोटे क्वेश्चन न बुझिया जे से देखिया पई चाहू छी जे स्टूडेंट टेबल रो प्रत्येक नेम कॉलम आसीबो प्रत्येक नेम कॉलम साइड रे थिबो से नेम ता केतेटा कैरेक्टर को बा केतेटा कैरेक्टर बा केतेटा नंबर ऑफ लेटर को से रखी छी सो हम लिखि परिबा सिलेक्ट नेम सपोज कॉलम के असला नेम कॉमा एडी को पके देली लेंथ ऑफ नेम फंक्शन पकेली फ्रॉम student table तमे लिखि दलो तले ऑटोमेटिकली से कोन करिवो जे आउटपुट के आसीबो मन रखो छुआ के टोटली आसीबो दुईटा कॉलम गुटे नेम हेडिंग दबो नेम हिसाब आसीबो गुटे कॉलम एपटे से देखोतिबो लेंथ कॉलम एबे एपटे गुटे लेटर आसीबो तर xy z तमे देइछो नंबर ऑफ कैरेक्टर से काउंट करिवो आउटपुट देखोतिबो 3 तो जेतटा रेकॉर्ड थिबो जेतटी नेम थिबो प्रत्येक नेम ता साइड कॉलम रे तार नंबर ऑफ कैरेक्टर को से डिस्प्ले कर दबो काने हमें यूज करछे को फंक्शन को लेंथ फंक्शन क्लियर तो एबे एई प्रोसीजर में सब कुछ हम डिस्कशन कर दबा देन आसला रिवर्स फंक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन ले देखिया पई गुटे नेम तमे देइछो तार ऑपोजिट डायरेक्शन ले तमे देखिया पई चाहछो ऑपोजिट डायरेक्शन जो कौन ना तमे गुटे नेम देइछो तार ऑपोजिट रे देखैबो त मु लिखछि नेम x y z आउटपुट देखै पई चाहछ रिवर्स ऑर्डर z y x बुझियले नै तो एठी जब लिखिबो लेंथ जगह आसीबो रिवर्स फंक्शन रे पुट डाउन कर दबो दिस इज द रिवर्स दिस इज द टू रिवर्स फंक्शन लो काम कोन ना this function is used for display the reverse order of a string value गोटे स्ट्रिंग वैल्यू रो रिवर्स ऑर्डर रे देखिबे पई हमको रिवर्स फंक्शन दरकार जदि तमे गोटे कॉलम रे रिवर्स फंक्शन कॉल कर दोउछो तले से कॉलम रो प्रत्येक वैल्यू रो रिवर्स ऑर्डर रे जिवो so it is carry out only one argument as a string and does not return like when return एबो रिटर्न एज ए एटी को टाइप रो सेटी नंबर आसुतिला किंतु एठी कोन आसीबो रिवर्स हेइबो तमे xy z दलो zy x आसला रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू तने ये कोन करिवो आर्गुमेंट नंबर रिटर्न करिवो तो एठी हम लिख पाइबा दिस इज द स्ट्रिंग लेंथ जगह लिखि दबो रिवर्स एंड स्ट्रिंग एग्जांपल लिखि पाइबा सिलेक्ट नेम लेंथ जगह पुट डाउन करी रिवर्स पुट डाउन करी फ्रॉम स्टूडेंट त नेम रो प्रत्येकटी वैल्यू ऑटोमेटिकली रिवर्स हे से तुमको डिस्प्ले करिवो क्लियर तो एबे आसीबा हमें जिबा नेक्स्ट फंक्शन को ट्रिम फंक्शन तापर फंक्शन टी कोन अछि ना ट्रिम फंक्शन विषय में डिस्कशन